कौन तुमको किए मना कला तुम बड़ भाई पाक जाइल कान फुसुर फुसुर करके कहीदे था तो भाई एटा को उड्र कर दियो बाट सफा हो तुम तो से कथा कल नहीं भाई को कान से कथा पकईल नहीं से बेले कौन है पुणी तक बड़ भाई बाहरी पड़े से बड़ भाई आसिले से कौन कहले आमको आ 10 दिन समय दि जाऊ आम कार्यक्रमटा करूँ मन रखु टाइमिंग टाइमिंग केतबेले जनवरी मसरे एवं 10 दिन नेबाई कार्यक्रम करी आज जाके करें नहीं तो बड़ भाई तो पाखक सान भाई जाइए पेपर आम पढ़ीलु कौन है कि गृह को तो जनइले नहीं तुम एत लंबा स्पीच रे नाई मुझे नेगोशिएट करके आसिली इन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट यू आर साइलेंट ऑन इट व्हाइल गिविंग आंसर ऊपर थोप देवे दिल्ली रु तुम ये थोप गिड़ापी बाध्य हम ये है गिड़बुनु बिकॉज इट इज इन कनकरेंट लिस्ट it is in concurrent list you cannot force it upon us we have the right to have our own choice आमे आम पिला को को बड़ी भाव में भल दे पारिबु शिक्षा एवं ओडिशार निजर निजत्व को किभली भाव में रखिकी कार्यक्रम करि पारिबु ताकू करा जाय पारिबो ये परस्पर टेकाटेकी कंपनी है कि एमाने कार्यक्रम करिया पे जाउछथि मैडम अपेक्षा तो एपर्यंत जाके कलनी से पर्यंत जाके अपेक्षा कर तुम बड़ भाई तुमको जो दिन पठे देवे हुलिया आम ओडिशा बहुत लोग बुलूँ बहुत बाबाजी मैंने बुलूँ जो डॉक्टरेट उपाधि पाँच डॉक्टर अमुक काली सका सुरेश भाई तुम जब इच्छा कर डॉक्टर सुरेश पुजारी जदि इच्छा कर डॉक्टर ये अच्छा बहुत तुम भी डॉक्टर पाई तेणुक नाई तुम जदि नापी इच्छा करुच बर्तमान तुम ड्राफ्ट खोलीदे तुम बड़ भाई खोलीदे जे तुम जहाँ पार श्रीलंका जाइकी बाबा को भलिया तुम तुम नहीं आस पार मैडम आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस आइटम नंबर 5 इन व्यू ऑफ द गोल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द स्कोप एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटीज have been defined in 59 numbers of activities that will enable students to become highly educated and employable. ये नुआ शिक्षा नीति विषय रे दीक्षांत भाषण आमर एटा मूव करी से पचारुची तते that the Odisha Universities Amendment Bill 2024 be referred to a select committee comprising of the following members with instruction to submit the report by first week of next session of the assembly. Member in charge Saroj Kumar Pradhan, Pramila Mallik, Ramchandra Kadam, Ranendra Pratap Swami, Arun Kumar Sahu, Jayanarayan Mishra, Pratap Kesari Dev, Tara Prasad Bahiniprati, Sanatan Bijoli, Santosh Khatwa, Upasana Mahapatra. Move है कहतु ना नुआ शिक्षा नीति का स्वार्थ रे मैडम नुआ शिक्षा नीति विषय रे दीक्षांत भाषण देले राजनीतिक कार्यकलाप विशेषकर सरकार विरुद्ध रे सभा समिति और प्रतिवाद आंदोलन एक रकम बंद होता कोरोना समय रे तार सुजोग अत्यंत सुनियोजित भाव शिक्षा नीति को घोषणा करते 2020 मसीहा 29 जुलाई दिन केंद्र सरकार विशेषकर महामारी जो देशर शैक्षिक कार्यकलाप एकदम ठप हो जाता बेले एवं संसद जितेबाला स्थगित थिला बिना विचार विमर्श एभली तरबरिया भाव जातीय शिक्षा नीति को घोषणा करने पूरापूरी अगणतांत्रिक मन है बेले राज्य सरकार मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को ग्रहण न करिकी सेमान मतमत को न नहीं कि तत्कालीन सरकार 2020 मसीहा 29 जुलाई दिन अनाउंसमेंट करते व्हेन देयर वाज लॉकडाउन हुआ माने सारा भारत वर्ष रे ये है मानसिकता 1968 रे ही थिला 1986 रे ही थिला 1992 रे अमेंडमेंट टू 1986 एक्ट ही थिला
ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ was taken into confidence. The stakeholders had been taken into confidence. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କନସେନସସ୍ ଇନ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି when so many states in the country in a diverse country like ours they have taken to ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁପର ଇମ୍ପୋଜ କରିଦେଇକିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଶ୍ମୀର କାଳେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କର୍ପୋରେଟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେଶର ରେଳ ବିମାନ ସେବା କୋଇଲା ଖଣିର ଆଦିର ଘରୋଇକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ତିନୋଟି କୃଷି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ କିମ୍ବା ସଂସଦକୁ ଆଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଅତଏବ ଲକଡାଉନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସରକାର ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ବିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବିନା ବିଚାର ଆଲୋଚନାରେ ଏକପାକ୍ଷିଆ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ରଖିଲେ ମେମ୍ବର ଇନଚାର୍ଜ ଇଏ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟତର ପ୍ରତିଫଳନ ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିଟି କାହା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗରିବ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାର୍ବଭୌମ ତଥା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଦେଶରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଇଏ କର୍ପୋରେଟାଇଜଡ ହେଇଗଲା ସମାଜର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବାସ୍ତବାୟିତ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ସଦ୍ୟ ଘୋଷିତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତିଟି ଆସିଛି NEP 2020 ଇଏ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସେସବୁ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବାହାରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶିକ୍ଷାର ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ସେହିପରି ମୁନାଫା ପାଇଁ ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫରେନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର PPP ମୋଡରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହେଁ ଏବଂ ଧନୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ହିଁ ପଢ଼ିବାର ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଘରୋଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ NEPର ଦୋହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି NEP ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କନସେନସସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଗରୁ ଯେତେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ହେଇଛି 1980, 68, 86ରେ Parliament was taken into consideration. Parliament को confidence को निया हितला सब राज्यर शिक्षा व्यवस्था को पचरा जाइतला Remember way back in 1976 जतବେଳେ emergency हितला education was in the state list it came into concurrent list 1976 मसीहारे even it is in the concurrent list now you want to centralize everything तेणु मु मंत्री महोदय मेंबर इंचार्ज कथार एकमत नुहे तेणु मुझे जो बिलटी आसी ए बिल जन्म जातकटा आपन टिके जानिबा दरकार मैडम हाइज मस्ट नो हाउ डिड इट कम अबाउट 9/11/2018 लेटर इश्यूड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ ओडिशा Chancellor addressing to the Chief Secretary, Odisha, indicating the difficulties in the recruitment of assistant professors, associate professors, and professors in 17 universities in Odisha. In this said letter, the Chancellor, our Governor, kiye Governor thele apan ko kahi bhi nahi tanga na, had advised the state government to examine the proposal for recruitment of university teachers, assistant professors, associate professors, and professors by a central agency like OPSC.
किए गवर्नर थे आप जानते एका चिंताधारा एका विचारधारा लोके और सेंट्रल एजेंसी. It was also advised that if this proposal was accepted, then corresponding amendment was to be made in the Odisha Universities Act 1989. The statutes made thereunder. This was the prescription by your Chancellor, the then Chancellor. 9/11/2020 कौन है? The Odisha Universities Act 1989 was amended, and the Odisha Universities Amendment Act 2020 was notified in the Odisha Gazette. Among other provisions, it was inserted in the statute that OPSC will conduct the examination for recruitment of state university teachers. 2021 में कौन है मैडम? मंत्री महोदय तो नथिले ना, ताकू टिके बतई दउची इतिहास जातक. 3 petitioners had filed separate 3 writ petitions in the High Court of Odisha challenging the validity of the Odisha Universities Amendment Act 2020. से केस को से आमर अमेंडमेंट को जोटा प्रथम रे आसीथला इन शेप ऑफ ए व्हाट यू कॉल ऑर्डिनेंस ताकू चैलेंज हैला. The University Grants Commission was implemented as one of the opposite parties along with the state of Odisha. One must know this because we are legislating. आईन तैयारी करुचे एभली आईन तैयारी करबा नहीं जो थरे आम भविष्य वंशधर माने सेतिबाई आमको दोष देवे. 24/1/2022 रे the High Court of Odisha by a common judgment dated 24/1/22 disposed of the writ petitions. The writ petitions were dismissed and the validity of the Odisha Universities Amendment Act 2020 was upheld. The position of the government was upheld by none other than the Odisha High Court. तापर कौन है? 2022 मसीहा जनवरी मासरू रिक्रुटमेंट चलिला ओपीएससी जरिया रे. हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स माने वैकेंसी रे थ्रू दी ओपीएससी रो कार्यक्रम द्वारा अपॉइंटमेंट पाइले. बट ऑल ऑफ ए सडन इन दैट ईयर द यूजीसी फाइल्ड. यूजीसी माने हिज एल्डर ब्रदर. You can understand. His elder brother filed SLP, special leave petition, before the Supreme Court. The Supreme Court passed order as to stay of the operation of the impugned order passed by the High Court for a period of 3 months. Madam जानिबा दरकार. Supreme Court कौन कले 25/2022 रे जो रखिले से ऑर्डर 25/2022 special leave petition. There shall be a stay of the operation High Court of the impugned order passed by the High Court for a period of 3 months, least after 8 weeks. ये Supreme Court रा order आसिला जो थे the entire operation came to a standstill. ये इतिहास से बिल 20/5/2022 the Supreme Court of India सेती बेले जतले बंद हैला तापरे एसएलपी फाइल हैला सेही केस पुणी उठिला. मैडम केबे उठिला? सेही सुप्रीम कोर्ट रे पुणी उठिला 23/1/2024 रे, just before this government came into power. So what was the pronouncement? What was the referendum? आकुमदे आपण जानिबा दरकार. The referendum was heard Mr. K.K. Venugopal, learned senior counsel, appearing for the applicant, that is state of Odisha. The learned counsel would advert to the prayer in IA 185450/2023
to say that the interim order passed by this court on 20/5/2022, 28/5/22, staying the operation of the impugned High Court judgment dismissing the writ petition should not stand in the way of the state government filling up the available vacancies of the teachers in the state universities through the Odisha Public Service Commission. This is not my saying. This is the pronouncement of the Supreme Court of India. एवं सेतिक बेले कौन है पुणी तक बड़ भाई बाहरी पड़े से बड़ भाई आसिले से कौन कहले आमको आ 10 दिन समय दि जाऊ आम कार्यक्रमटा करूँ मन रखु टाइमिंग केतबेले जनवरी मसरे एवं 10 दिन नेबाई कार्यक्रम करी आज जाके करिले नहीं तो बड़ भाई पाखक सान भाई जाइए पेपर आम पढ़ी कौन है कि गृह को तो जनइले नहीं तुम एत लंबा स्पीच रे ना मुझे नेगोशिएट करके आसिली इन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट यू आर साइलेंट ऑन इट व्हाइल गिविंग आंसर प्लीज रिवर्ट बैक टू योर आर्गुमेंट्स एवं आपर कौन है सर तेणुक समथिंग इज सबजुडिस इन द अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री से अवस्था भितर ये गोटे नुआ बिल आनिले जहाँ को नहीं आनी पारे नहीं सो द पोजिशन ऑफ लॉ एथि कौन आई वांट टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर इन चार्ज द फंडामेंटल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कैन दिस बिल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली when something is stayed by the Supreme Court of India? Have you taken the permission of the Supreme Court of India that we want to negate the provisions? And pendant light. Huh? And pendant light. And Pendant light mana subjudice. pendant like subjudice jota achi. This question arises because this bill is entitled the Odisha Universities Amendment Bill 2024. A bill further to amend the Odisha Universities Act 1989 is meant to amend the Odisha Universities Act 1989 as amended till 2020 as stated in the paragraph 1 of the statement of objects and reasons. कौन सीटा सर मैडम से ये टी आपण पढ़तु जोटा आमर नंबर 1 ने आसिला स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स सरकार रखछथि द ओडिशा यूनिवर्सिटीज एक्ट 1989 was enacted in the year 1989 and further amended till 2020. At present 15 state public universities coming under the administrative control of Higher Education Department are functioning under the Odisha Universities Act 1989. With passage of time, some of the existing provisions of the act have to be amended to ensure the seamless administrative and academic functioning of the universities as well as aligned with the current educational scenarios. It becomes imperative to revisit and amend certain provisions of this act. But that is why I have put up this. Therefore, the Act 1989 includes the amendments effected by the Odisha Universities Amendment Act of 2020, has been stayed by the Supreme Court. That is a part of the Odisha Universities Act 1989, to amend which the Bill 2024 is proposed, has been still sub judice in the Supreme Court and stayed. This is the factual position. Under this situation, can this Amendment Bill 2024 be introduced, considered? Can this question will not be asked by other petitioners? आमे आमर फ्यूचर जनरेशन पाई जा करिक जीवु से आम उत्तरदायी रही तेणु 1 step forward 2 step backward 2 step forward 1 step backward caution with aggression एमाने परमिशन नहीं have they taken the permission? If the government is so eager to introduce the Amendment Bill 2024, it should take steps to get the stay vacated or persuade the UGC to withdraw the case from Supreme Court.
कौन तुमको किए मना कला तुम बड़ भाई पाक जाइल ताकू कान फुसुर फुसुर करके कहीदे था तो भाई एटा को उड्र कर दियो बाट सफा हो तुम तो से कथा कल नहीं भाई को कान से कथा पकईल नहीं इट अपियर्स September 1st 2024 Times of India that our Honorable Higher Education Minister had held discussion with the UGC officials on the government's proposal on amendments. Am I correct? Times of India. तमें कथार्ता करिछ partly correct. So you are holding brief for him. So, will Minister make a statement on this discussion with UGC? Has he requested them to withdraw their petition in the Supreme Court challenging Amendment Act of 2020? In that case, the legal complication will not arise. Nokhare chhidiba jinso ko e batare no niya jao. Then, Madam, the subclause B of the clause 3 of Amendment Bill 2024 is not necessary. In view of the subsection 5 of the section 3 and section 24. I will come to those things, but before that, something else has also taken place. What has taken place? January 6, February 6, 2025, 6th Sombar, 6th January, प्रारंभिक संस्कार मार्गदर्शिका उच्च शिक्षा को समावेशी करिबा. The UGC has come out with a draft resolution. What is the position? से resolution नो connectivity ता आ सहित कोन ताकु मुटी के जदि न कहबी तबे will be doing injustice. एवं से injustice ता सर मैडम will go this way or that way. तो UGC जनवरी 6 रे बुधवार दिन ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन द्वारा आसला गोटे रिजोल्यूशन ड्राफ्ट रिजोल्यूशन आपको 28/2/2025 माने 2 दिन 3 दिन तले पाखापाखि आज के तारीख है 2 तारीख 28/2/2025 रे पब्लिक ओपिनियन रो लास्ट डेट थला एंड व्हाट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया डिपोज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन रोहित बेमुला केस ताकू मुझे से ऑर्डर पेपर मध्य पढ़ी आपण सामने यूजीसी रो शॉर्ट टाइटल एप्लिकेशन ने देला आपण सुनतु मैडम हाउ डेंजरस दिस पीपुल आर. ये गुरुकुल कथा आमको जनमामु कथा देखौछथि. व्हाट इज देयर इंटरनल एंड हिडन एजेंडा. दिस शैल अप्लाई to every university established or incorporated or under a central act, provincial act or state act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the commission in consultation with the university concerned under clause F of section 2 of the University Grants Commission Act 1956 and every institution deemed to be a university under section 3 of the said act. ये नेशनलाइज कर देले भारत वर्ष सब यूनिवर्सिटी को ये नेशनलाइज कर देले ए कार्यक्रम रे आकु सब राज्य रे तांकर निजर एनडीए पार्टनर माने मध्य आकु अपोज करछथि. टीडीपी योर जेडीयू देन अदर स्टेट्स माने रिजोल्यूशन कलेनी. तेलंगाना कत तेलंगाना एवं साउथ स्टेट्स 6 जन दे हैव गिवन ए रिजोइंडर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये रिजोल्यूशन एपर्यंत देखा बाहरी नहीं कारण आपको मतलब बीजेडी मध्य आमे आम तरफ करा जाए. तेणुक व्हाट हैज हैपेंड द फॉल आउट बाय टेकिंग द एब्सोल्यूट पावर टू अपॉइंट वाइस चांसलर्स विदाउट एनी पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वर्चुअली nationalized the universities. The state government has no say in the selection and appointment of the universities that were number 1 established by the state government, number 2 the benefit of the residents of the state and our state ro nijotwa
आमर परिभाषा आमर परिचय आमर अनुचिंता आदि किसी देखा नहीं मैडम नंबर 3 फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट दिस इज बिजारे दिस इज अनएक्सेप्टेबल विल नॉट एक्सेप्ट दिस will not stand this saffronization of education in Odisha. The draft regulations are a blow to the federalism and states' rights. आम राज्यर अधिकार को एमाने छड़े नबा पे व्यवस्था करुछंती एवं आपण मैडम जानिबे the new draft regulations prescribe the mode of search cum selection and appointments of the vice chancellor. It will be through a 3-member committee comprising a nominee each of the chancellor, UGC and apex body syndicate, Senate, board of management of the university. So Odisha re kehi nahathi. What will happen? These people want to declare viceroys. The vice chancellors will be viceroys. जेमती ब्रिटिश अमल चली उपरू थोप देवे दिल्ली रू तमें ये थोप गिणवाई बाध्य हम ये है गिणबुनु बिकॉज इट इज इन कंकरेंट लिस्ट इट इज इन कंकरेंट लिस्ट यू कैनॉट फोर्स इट अपॉन अस वी हैव द राइट टू हैव आवर ओन चॉइस आमे आम पिला को को भाव में भल दे पारू शिक्षा और ओडिशार निजर निजत्व को किभली भाव में रखिकी कार्यक्रम करूँ ताकू करा जाई पारिबो The draft regulations, if notified, आसी ना पर्यंत कहीं आसी ना मुझे पाक आसूची the use of the rights of the state governments and those who had established university like Utkal University for the benefit of the residents of the state and funds of the university out of the state's own resources. The draft regulations virtually nationalize the universities and the Messiah will take control of all higher education institutions of the country. Messiah Mahamanav आपण बुझुतबे जाक से माने सेंट्रलाइज करके ना कार्यक्रम करूचथि दिस इज अ क्लियरली एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन आवर एजुकेशन and also facilitate the lateral entry of their stews, their obscurantist elements at the helm of prestigious institutions in Odisha. As per the new draft guidelines, any industry experts किए लुहा लकड़ कर तम सगड़ी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर as well as senior professionals from public sector can be directly appointed as vice chancellors of the university. जहाँ को पारिबो तमे ताकू नहीं आसीबो प्रोफेसर ऑफ ताकू लिखिछथि कोन प्रैक्टिस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एटा नुआ वार्ड एमाने जन्म करछथि मैडम जा द्वारा कि प्रभु तो क्षति हवा पई जाउछि हमर एवं से माने कहउछथि notable contributions. ये को माने who are these notable persons? Who are these? Yes, bill has something to be recorded with this. bill ला को विषयटा शुणी सार तेणुक जिते बड़े गोटे बिल एभली गोटे यूजीसी रो बिल रही सेते तमें कई दौड़िकिना कामटा करुच कौन पाई ए बिल कौन पाई आसुची व्हेन दिस ओवरआर्चिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन इज पेंडिंग तमें आपको करिबो इफ इट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस उत्तर कौन रखिबो से उत्तर तमें दे पारिबो तम मंत्री दे पारिबे यू कैनॉट डू दैट तेणु आज मैडम मु कहिया पई चाहूची वी कैनॉट अलाउ जो रखिले जे कौन सी प्रकार भाइस चांसलर मान को जो रखिबे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेंस हेले ओडिशार सबू यूजीसी ग्रांट बंद कर देबे दिस इज आल्सो ए माने ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन जहाँ को आम अपोज करुचु एवं से मैडम मु निवेदन करी जे मंत्री महोदय शुड वेट जे पर्यंत जाके तुमर बड़ भाई जो आनी से रिजोल्यूशन डेट अच्छी कारण आपण मैडम कहि जे गत 28 तारीख दिन आमर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सी तांकर
आभरमेंट रे कहले कहले जे 28 तारीख जाके आमर अच्छी तापर गोटाए मास आमको दरकार से गोटाए मास जो सरीज से कार्यक्रम हम सेटा केमती कहले सुप्रीम कोर्टर ऑर्डर 28 तारीख सब कथा टे बुद्धि सहकार एडवाइजर मान बुझिकी नियो इन सिविल नंबर 1149 2019 डेटेड है 28/2/2025 this matter was called on for hearing today and in that at the outset Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General of India, points out that the University Grants Commission has prepared a draft regulation about which I was quoting. Where is that gentleman gone? Ebang sei anusare the draft regulation which inter alia deals with the issues raised in the instant writ petition regarding Rohit Vemula case. Ebang seti se kahuchati जे the petitioners, interveners or any other persons may submit their suggestions to the UGC which shall be duly considered. तो जदि आमे आम दल तरफ भारत वर्षर विभिन्न कोण अनुकोण ड्राफ्ट रिजोल्यूशन उपरे दिया जाइछि which is encompassing this legislation that is on the floor today, why the government is trying to push through? The heaven shall not fall. Eita jadi asibo and if the government of India accepts the general opinion and with a draft जो omission commission जदि थिबो ताकू अपेक्षा तो ए पर्यंत जाके कलनी से पर्यंत जाके अपेक्षा करो तुम बड़ भाई तुमको जो दिन पठेई देबे हुलिया सही दिन ए कार्यक्रम हो पारिबो तेणु सही this is ill juxtaposed. I oppose this because this will give a wrong signal, madam. In the outset, I will not allow the saffronization of the education system in Odisha. You cannot have your stools to be superimposed as vice chancellors, as professors, as assistant professors. ये विचित्र कथा जी एमटेक पाठ पढ़ी से संस्कृतर प्रोफेसर हो ये यूजीसी रे अच्छी से जदि करदेले तुम एठी कर देही पद पल्लव तुम जाके तुमर रेकर्ड यहाँ नियो पढ़ी नियो हाँ इफ इट इज कम इट इज इन द मेंशन इन द ड्राफ्ट इटसेल्फ इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट हेले करिवे किंतु एटा जो ड्राफ्ट रे अच्छी ताको मानि नियो Vice Chancellors of the University shall appoint Vice Chancellors. ये परस्पर टेकाटेकी कंपनी है कि एमाने कार्यक्रम करिया पे जाउछथि मैडम जहाँ अत्यंत दुखदायक. This is fraught with danger and you will see madam that the selection committee shall decide whether the research publications are in a peer reviewed journal. तुम रिसर्च पेपर दब आम ओडिशा रे बहुत लोक बुलुचती बहुत बाबाजी माने बुलुचती जो डॉक्टरेट उपाधि पाउचती डॉक्टर अमुक काली सकाळे सुरेश भाई तुम जब इच्छा कर डॉक्टर सुरेश पुजारी जब इच्छा कर डॉक्टर ये अछती बहुत तुम भी डॉक्टर पाई तेणुक नाई तुम जदि नवाप इच्छा करुच बर्तमान तुम ड्राफ्ट खोलीदेले तुम बड़ भाई खोलीदेले जे तुम जहाँ को पार श्रीलंका जाइकी बाबा भाया तुम तुम नहीं आसपार तेणुक ये गोटाए षड्यंत्र आम एगेंस्ट दि यूनिवर्सिटी एगेंस्ट दि एजुकेशन सिस्टम. तेणु मु निवेदन करी मैडम यही जो कार्यक्रम बर्तमान करा जाउची से कार्यक्रम को स्थगित रखी मंत्री महोदय गत दीटा सेशन आपको रखी थे मु निवेदन करी रिकनसिडरेशन करा जाऊ एवं ये ड्राफ्ट को मध्य
किभଳି भाबरे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को किभଳି भाबरे ग्रहण करिछि से कथा तकर उत्तर रखिबे एवं सही अनुसार मु निवेदन करबी मैडम नोटेबल कंट्रीब्यूशंस जो कथा रखा जाइछि दिस इज अ मिसनोवर हायर एजुकेशन को खराब करिबार ये व्यवस्था तेणु आई अपोज दिस piece of legislation that is before the house and I conclude now second reading re that is why hurriedly न करिकी मु निवेदन करिबी गृहर समस्त पाखे निवेदन करिबी जे आकु सिलेक्ट कमिटी के दिया जाओ अपेक्षा करिबा हेवन शैल नॉट फॉल तेणु सिलेक्ट कमिटी को गले सबू भाई माने जो माने अछंती गवर्नमेंट सिलेक्ट कमिटी करू जमती पार्लियामेंट रे जेपीसी होची स्टैंडिंग कमिटी होची ताकू देखिबे तर्जमा करिवे केंद्र सरकार को बर्तमान गोटाए मास समय नहीं चती सी जहाँ को से सुप्रीम कोर्ट रे कहते ए समय भितर समय नहीं आकु तर्जमा करी कार्यकारी करने मु निवेदन कर I want that this should be sent to the select committee as has been declared by me. Thank you.